हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट राहुल मेहंदीरत्ता। और आज यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी हुआ नहीं है। यस, आज से मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। हिंदी में बात मैं क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि मैं डेमोग्राफिक्स चेक कर रहा था हमारे चैनल के, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस आर फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश एंड सराउंडिंग कंट्रीज एंड सराउंडिंग एरियाज। सो कोशिश यही रहेगी कि हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि वहाँ की मातृभाषा है, जैसे कि हिंदी। तो इसलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लासेस। कि मैं अभी रिसेंटली अपना एग्जाम दे के आया हूँ एंड आपके भाई ने 8 बैंड ले लिए है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे आप बोल सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो एग्जाम हुआ अभी उसमें क्यू कार्ड जो था वो क्या था। डिस्क्राइब प्लेस यू विजिटेड वेयर द एयर वॉज पोल्यूटेड। हम सब जानते हैं कि हमें क्यू कार्ड की प्रिपरेशन के लिए 1 मिनट मिलता है एंड उसके बाद हमें 2 मिनट तक वो क्यू कार्ड जो है वो एग्जामिनर को सुनाना होता है। वो हमें उससे पहले भी चुप करवा सकता है, बट अब मैं चुप हो जाता हूँ और मैं क्यू कार्ड बोलना शुरू करता हूँ। As the world is progressing and moving towards being more and more fast-paced, there are many new cars on roads every day. Where on one side this is a very positive thing when we consider in terms of the ease of travel, it can however be very detrimental to the environment. Although I knew about this theoretically, I witnessed the practical side of this a few days ago when I visited my grandmother's home, which is situated in the national capital of India, New Delhi. It was a sky full of stars when we were still to cross the border of the territory I reside in, neighboring my destination state. As soon as we reached Delhi, we noticed a strange smell which started penetrating through the open windows of our automobile. We soon realized this was nothing but the smoke coming from the hundreds of thousands of vehicles which were surrounding and honking at each other. This was actually followed by a buzz in our ears. As we reached our end destination and got out of our car, I suddenly started coughing very heavily. Grandparents were not surprised to see this and advised me to quickly move in where they already had the air purifier turned on. Although I am not as accurate as the scientific instrument used to measure the air grade, I'm pretty sure the difference inside and outside was huge. I learned from them that the state government was actively trying to cope up with the issue by banning the use of vehicles more than 5 years old. Next day, we had a plan to go to a nearby park for an evening stroll, which did not turn out to be exactly the way we wanted it to be. It was supposed to be a lung refreshing thing, but instead we felt like passive smokers. I come from a place where I've always been surrounded by open fields and spaces. Every time the family planned a visit to my mother's parents' home, I have had a hint of how lucky I am to be living in a small town with not too many fancy facilities, but with the basic ingredient of life, some good air to breathe. And if I am ever offered with a chance to barter this with anything the developed city has to offer, I would not accept the offer. ऑलराइट एवरीबॉडी, सो ये था वो क्यू कार्ड जो मैंने अभी एग्जाम में फेस किया। और इसमें आपने गौर फरमाया होगा कि हमने सारी चीज़ों का आंसर दे दिया और हमने 2 मिनट के लिए भी बोल दिया। अगर आपको ये हिंदी लैंग्वेज अच्छी लगी है तो आप मुझे बताएं, अगर नहीं अच्छी लगी तो वी कैन ऑलवेज स्विच बैक टू इंग्लिश। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट क्यू कार्ड। थैंक यू।